गुड मॉर्निंग पिले आउ समस्ते भल अच्छ ना भल तो थी कौन थी जार देह भल ना इनफॉर्म कर कौन व्यवस्था करवा हो ठीक अच्छे जहाँ भी हो आज आम पढ़ा पिले फाराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस काली आम कौन पढ़ी थे फाराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हाँ ना नहीं ना फाराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कौन कहला when the mass of the substance liberated or deposited or dissolves at the electrode as a result of electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. Dear students, these are the easy statements. I hope you all people shall remember these statements, and its mathematical expression is the W proportion Q. W means what? We know very well. W is the mass of substance liberated at the electrode. And Q means what? Q is the quantity of electricity passed through the electrolyte. Already that one before class already we discussed it. W proportional Q, W proportional IT, W equal to ZIT. Q means what? Q equal to I into T. First of all we know I equal to electric current equal to charge by time. So Q equal to I into the. Then like this we are getting the last conclusion point, W equal to Z. When we take electric current equal to 1 ampere, time equal to 1 second, then we are getting this is the point. And the another point is the electrochemical equivalent. Electrochemical equivalent is represented by the letter Z. What do you mean by electrochemical equivalent? Electrochemical equivalent is defined as the mass of the substance liberated by the passage of 1 coulomb of electricity through the electrolytes. And already we discussed also 1 coulomb equal to 1 ampere into 1 second. 1 Faraday equal to dash coulomb, 96,500 coulomb. Charge of 1 electron equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Charge of n electron equal to 1.6 into 10 power minus 90 coulomb, and multiply Avogadro's number. So 1 Faraday equal to, we are getting at finally 96,500 coulombs. Or at last part, n is known as Avogadro's number. What is the Avogadro's number? All of you remember 6.023 into 10 power 23 coulomb. Okay, now let us discuss our topic, Faraday's second law of electrolysis. See, that is our Faraday's first law of electrolysis. It is second law. Now Faraday's second law of electrolysis कौन कहूँ? It is the extension of Faraday's first law. कौन कहूँ पिले ना Faraday's first law को अनुध्यान करी extension है पुणी यही second law डा माने first law को बेस करी पुणी second law को आसी अच्छी है. Statement का कार Faraday's second law of electrolysis statement by definition कौन कहूँ? When the same quantity of electricity जेते बेले समान amount रो electricity is passed through same amount रे जदि electricity passed हबो through का जरिया रे different electrolytes का कोठी पास हबो electricity same amount रो ना different electrolytes different भिन्न electrolytes मन जानी जो electrolytes is a substance that solution conduct electricity through aqueous solution connected in series. Different electrolytes कौन होइथिबे पिले connected होइथिबे काहे रे गोटे series माने straight way रे. Then the masses of the different substance, then तापरे the masses माने गोटे substance रो माने then the masses of the different substance liberated तापरे पुनी कौन हबो different substance रो mass पुनी कौन हबो liberated हबो और deposited भी हबो कोठार हबो at the electrodes माने कौन कहितली विद्युत संयोजक दुईटी तार इंग्लिश रे कहया गले these are the two metallic plates, one side is electric current is entry, another side is electric current exist, are directly proportional to their equivalent masses. Equivalent masses माने के पिले E, electrochemical equivalent माने Z, equivalent masses माने खाली E को बुझेइबो. ठीक अछि पिले. So this is the definition or statement of Faraday's second law of electricity. How they are represents, how they are explanation method तले दिया है diagram देखो. Dear students, these are the three electrolytic tanks. Inside of three electrolytic tanks are taken a aqueous solution, and each electrolytic tank is containing two metallic plates. These are the two metallic plates is connected with one electrolytic tank. Okay, getting my point? So next, this is your battery connected with, this is your key, switch on off.
this is your battery plus minus then if when we put a here first electrolytic tank silver nitrate solution, then it will be dissociate. One is Ag plus, another is a NO3, another also. Second electrolytic tank is containing copper sulfate solution. When we put a copper sulfate solution, then it will be dissociate copper 2 plus, SO4 2 minus, sulfuric acid H2SO4 H plus, SO4 2 minus. Dear students, these are the different electrolytes connected in battery and series. This is the Faraday's second law of electrolysis. Okay, simply easy diagram is there. एक diagram को देखी कि हमें अभी explain करेगा. देखो, okay. स्टेटमेंट एटा होची बिले तार एक्सप्लेनेशन हैला मो एठी लेखि नाही तमे हेडिंग देई दबो एक्सप्लेनेशन कंसीडर 3 वेसल कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सिल्वर नाइट्रेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड मो कहली मने करा जाऊ तीनटा वेसल तीनटा इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक रे वेसल माने पात्र रे कंटेनिंग नबा कोन नबा सॉल्यूशन नबा को सॉल्यूशन नबा कॉपर सल्फेट सिल्वर नाइट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन निया गला लेट दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ताइरे पुनी कोन करबा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को कनेक्टेड करबा इन सीरीज एंड द सेम अमाउंट ऑफ करंट आउ समान अमाउंट रो करंट पुनी कोन करबा पासड करबा केमती थ्रो का जरे रे गिवन टाइम गोटे 5 मिनिट्स के 2 मिनिट्स के 1 दिया जाइथिबा टाइम रे तीनटा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स रे पुनी आमे कोन करबा इलेक्ट्रिक करंट पास करबा इफ जदी q इज द चार्ज पासड थ्रो q होबो जदी हमर चार्ज पासड थ्रो दीज इलेक्ट्रोलाइट्स सही इलेक्ट्रोलाइट्स रे जदी q चार्ज एयर पास होबो देन अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन तापरे फैराडेज फर्स्ट लॉ को अनुध्यान करी WAG इक्वल टू ZAGQ W इक्वल टू ZQ हमें पाइथिले तो सिल्वर है एडी भी सिल्वर है इक्वेशन नंबर 2 W कॉपर इक्वल टू Z कॉपर Q W हाइड्रोजन इक्वल टू Z हाइड्रोजन Q W माने कोन मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड्स Z माने कोन मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Q इक्वल टू कोन चार्ज equation number 1 2 3 taking the equation number 1 and 2 then we get W equal W this is जान पर जो Ag by Cu equal to ZAG by Z एटा होची W so WAG by W equal to ZAG माने हम कोन ZAG into 965 जानि जे 1 फैराडे इक्वल एति कुलम तार फार्मूला खाली पकै कि लास्ट फाइनली पळाइला EAG by ECU माने मास कोन हम कहितली एटा कोन कहितली बिले इक्विवेलेंट मास बोली कहितली equivalent mass of silver and equivalent mass of copper. Then finally where जो ठारे W को हमें कौन कहे बिले mass of substance deposited or liberated कही दिली Z को electrochemical equivalent of substance ये होची equivalent mass of substance. Please speed करिकी वो Faraday's second law of electrolysis सोचे देली बुझी परजो एबे बाकी तमरो काम